road is very slippery. The road is very slippery. So I left home in right time. Then I take one step towards the school. I come 2 steps backwards. Again, I take one step. I come 2 steps backwards. So then the teacher looked. Yes, it's actually muddy. So then he asked, how did you reach the school? Then he said, finally what I did, I turned my face towards the house and backwards to the school. And then I am taking 1 step towards my house and I'm coming 2 steps towards the school. And this way I reached the school. You understood? Yes, bro. Ah. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Okay, so we already read 2 sutras. In a nutshell, I'm reading Pratyasha Lukslulupaha. This is a very simple sutra. Pratyayasya, Sashti Vibhakti, Pratyayaka. Luk, Shlu, Lupa. There are 3 words, Luk, Shlu and Lupa. So whether it is Luk or Shlu or Lupa, these are all 3 synonymous. So if they say Luk means omission, Lup means omission, and Shlu means omission. So some sutras you will find the word Luk, some sutras you will find the word Shlu, and some sutras you will find Luk. Clear? Pratyasha Luk Slulupaha. And next sutra is Yes. Jassasoho Shihi. Sorry, Shi Sarvanama Sthanam. Shi Sarvanama Sthanam. So, Shi is equal to Sarvanam Sthan. What are the Sarvanam Sthan? I explained before also, if you remember, that the Vibhakti, Prathama Vibhakti, 3 forms, Balakaha, Balako, Balakaha, plus Dvitiya Vibhakti, 2 forms, Balakam, Balakau. These 5 places are called Sarvanama Sthana. Sarvanama Sthana. And She also, She Sanya. But this is applicable in masculine and feminine. But when it comes to neuter, Dvitiya Vibhakti Bahuvachan, Dvitiya Vibhakti plural will also be counted as She Sthan, Sarvanam Sthan. This is an exception. Why? Because in a neuter gender, Phalam Phale Phalani, Phalam Phale Phalani, Prathama Vibhakti and Dvitiya Vibhakti are exactly the same. So that's why there is an exception in case of Napumsaklinga. Clear? You understood? Okay. Yes. आई बात समझ में? किस किस को समझ में नहीं आई? आगे आगे समझ में सब. वेरी गुड. सर्वे विद्वांसाः अत्र उपस्थिताः. नटरानी राधिका आ गई समझ में बात? पद्म राधा देवी. यस प्रभु जी, प्रभु जी समझ में आ गया. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो उसके बाद देखिए नेक्स्ट सूत्र है जश शशो शिहि. इफ यू हैव लघु सिद्धांत, क्लीवाद अनयोः शिहि स्यात्. अनयोः षष्ठी द्विवचन. अनयोः माने 2 चीजों की बात कर रहे हैं, 2 थिंग्स. सो जश एंड शश both are considered she sanya. Why? Because in Napumsaklinga the 2 forms of Prathama and Dvitiya Vibhakti are the same. Phalam Phale Phalani, Phalam Phale Phalani are the same. Okay. Now which sanya? Pradipta Gauranga. उपपद.
उपपद संज्ञा, ये समझने लायक है। उपपदम अतिंग, कौन सी पेज? प्रदीप्त गौरांग 185. 185. Before that, I would like to tell you that what is I was talking about bhadyadadi juhotyadi, right? Dibadi swadi revacha. I have to see where is the sutra. Anyway, 140. No, 185. 185. Okay. उपपदमिदं उपपदं सुबन्तं समर्थेन नित्यं समस्यते अतिंग चाय समासः कुंभं करोति इति कुंभकारः। आप पूजा करते हैं क्या? दुर्गा पूजा काफी किया हूँ। हाँ, इसीलिए आप बोल रहे हैं तो it sounds like chanting mantras. Yes. मंत्र करते थे। You're chanting upapadam subantam samarthena nityam swaha. Upapadam subantam samarthena nityam samasyate. अतिंगंतस चायम समासः कुंभम करोतीति कुंभकारः अतिंकिम मां भवान भूत मांगी लुंगीति सप्तमी निर्देशान मंडूपपदम गति कारकोप उपपदिनाम कृद्भिः सह समासवचनम प्राक सुवुत्पत्ते व्याघ्री अश्वीकृति कच्छपि इत्यादि. So upapadam, see, it's an kind of exception. What is the definition of samas? Now samas is अंतर्भिन्न पदत्वेपि एकपदी भवनम. Write it down. अंतर्भिन्न पदत्वेपि एकपदी भवनम. मुझे रिपीट करिए ना प्लीज। अंतर्भिन्न पदत्वेपि एकपदी भवनम. अंतर्भिन्नं पदत्वेपि एकपदी भवनम. हाँ, अंतर्भिन्न, भिन्नम नहीं, अंतर्भिन्न पदत्वेपि. पदत्वेपि पदत्वेपि, राइट एज यू हियर, पदत्वेपि. द्वे द्वे और पदत्वे, पदत्वेपि, जैसा समत्व, लघुत्व. ओके ओके. सो अंतर्भिन्न पदत्वेपि एकपदी भवनम समसनम. तो समास किसको कहते हैं? ना दोनों अलग पद होने पर भी. जैसे कृष्णस्य समीपम. सो कृष्णस्य is a person, षष्ठी वचन, and samipam is closeness. अव्ययी भाव समास. उपकृष्णम, it became उपकृष्णम. So krishnasya and samipam has no connection. These are two different type of words. And krishnasya is which vibhakti? षष्ठी. षष्ठी एक वचन. एक वचन. And samipam? तृतीया एक वचन. तृतीया हाँ, द्वितीया एक वचन. तो दूर दूर तक दोनों का कोई रिश्ता नहीं है. वन इज षष्ठी, वन इज द्वितीया एक वचन. बट स्टिल इट बिकेम उपकृष्णम. रामश्च कृष्णश्च, राम is a different person, Krishna is a different person, but it became Rama Krishna. Dvanda samas. So even though they have no
commonness, but still it makes a single samas. This is samas. Here in the book, you will find the definition I gave from different book, but the simple definition you will find here: samasanam samasaha. At the beginning of samas, you will see samasanam samasaha. That's it. So here what's happening, it's coming under tatpurush samas. Tatpurush is a kind of samas, and this upapada sanya is coming here. Upapadam suvantam samarthena nityam samasyate atingantaschayam samasaha. So generally it happens that one word means subanta, a vibhakti, is conjoined with another vibhakti. Vibhakti rupa, that means shabda rupa is conjoined with another shabda rupa, and that is samas. It's saying antarvinna padatvepi. But here there are some samasas which one is subanta but the other is tinganta, a verb, which is very rare. Is it clear? तो मुझे एक बार बता दीजिए नंद बार। समास बीच बीच में हिंदी भी बोलिए प्रभु जी। हाँ, समास दो पदों के मिलन से होता है, और पद यानी विभक्ति, तो विभक्ति के साथ विभक्ति का मिलन होता है और समास बनता है। जैसे मैंने कहा कृष्णस्य षष्ठी विभक्ति और समीपम द्वितीया विभक्ति। लेकिन कहीं कहीं पे सुबंत के साथ तिङंत का मिलन होता है। तिङंत यानी वर्ब। तो एक सुबंत है, शब्द रूप है, और एक धातु है। इन दोनों का जब मिलन होता है और जो समास उत्पन्न होता है उसको उपपद समास कहते हैं। और ये उपपद समास तत्पुरुष कैटेगरी में आता है। आई बात समझ में? जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारः। कुंभम कौन सी विभक्ति? which विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। हाँ, कुंभम। कुंभम प्रथमा ना? नहीं, द्वितीय वचन कर्म है। कुंभम करोति। करोति इज which word? करोति वर्ब। हाँ, त्रिधातु वर्ब, क्रिया है हाँ। ना। तो which लकार बोलो पूरा। करोति करोति करता करोति। बस। और बाकी एक प्रथम पुरुष एक वचन। कौन सी लकार? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। हाँ, ऐसे सभी पढ़े लिखे की तरह बोलिए। तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, दिस इज अ वर्ब, बट द अदर वन कुंभम is vibhakti. So this is an unusual combination which comes very rarely. This kind of combination is called upapadam. Another is vyagri. So V is a upasarga and ghra dhatu, ghra, pa, ghrad, ma, these are dhatus. This is a verb. So this is gatyarthak. It's a gatyarthak shabda. Aghra iti gatikarak, to smell. That's how vyagri, visheshana ghranam granhati, which has a special kind of sense of smelling, is tiger, vyagri. And female, ni pratyay, then vyagri. So anyway, you remember kumbhakaraha, that's enough. Ashvikriti, kachapi,
These are samas, but these are special type of samas, which is very rare. So kumbham karoti iti kumbhakaraha, this you can remember. If you understood that, then later things will be unlocked gradually. Everybody understood? Yes, yes. तो हिंदी में भी बोल दीजिए एक बार तो बोल दिया ना, एक बार बोल दिया ना। अच्छा, मैंने कहा ना उपपद समास किसको कहते हैं? जो जैसे कुंभकार में नहीं, मैं कुंभ, अभी जो बता समझाया ना उसको, जैसे व्याघ्री अशुकृति को जो समझाया वो हिंदी में थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, वो वी उपसर्ग है और घ्रा धातु है, ठीक है, उससे व्याघ्री शब्द बना। तो घ्रा एक धातु है जो कि समास में चलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बनाया गया है। अश्वीकृति भी ऐसे ही है, कृति एक क्री धातु है। तो ऐसे अगर धातु के साथ शब्दों का मिलन देखा जाए, जो कि बड़ा विरल है, तो इसको उपपद में लाया जाता है। फिर उसका फिर और डिवीजन सब डिविजन है जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप समझ नहीं पाएंगे ज्यादा। आप कुंभकार उदाहरण सिंपल समझ लीजिए, समझ गए? अच्छा, तो उपपद संज्ञा देखिए, उपपदम अतिंग सूत्र को देखिए, उपपदम अतिंग, तिंग को छोड़ के, Now 72, बहुवचन संज्ञा. This is very simple, you know. What is बहुवचन plural? Bahushu बहुवचनम. When there are many, that is बहुवचन, very simple. 73, एक वचन संज्ञा, द्वये कयोर द्विवचनैक वचने. And you see the next संज्ञा, द्विवचन संज्ञा is the same. द्वये कयोर द्विवचनैक वचने. So the same sutra is applied for ekvachan sanya and dvivachan sanya. Where there is a single, it is ekavachanam. Where there is two, it is dvivachan. And bahushu bahuvachanam. When they are more than two, that is bahuvachan. Very simple. Yes, yes. Okay, good. Now this has to be understood. Yasmat pratyaya vidhis tadadi pratyayangam. This is a beautiful sutra. Anga sanya. Now this anga means limb, but in grammar anga is defined in a different way. Let's check it. 38 page. 38. So see, yasmat pratyaya vidhi tadadi pratyayangam. Yaha pratyayo yasmat kriyate. तद आदि शब्द रूपम तस्मिन् नंगम स्यात्. So pratyaya is added with the pada. Okay, there is a word already, and along with that we add one pratyaya. Right? जैसे अण प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय, आलुच प्रत्यय. There are many pratyas. Touch pratyay, ni pratyay. So this pratyaya is added to some existing word, right? With the prakriti. Pratyaya is added with the prakriti. So it's saying yah pratyayoho yasmat kriyate. So from where the pratyaya is being added, to which? Tad adi shabda swarupam tasmin angam syat. So the existing word which was already there, along with that, Dasharatha,
then you put an pratyay and other pratyas, then it becomes Dasharathi. So this Dasharatha, the word which was already existing, is called Pratyayanga, Angam. That is called Anga. Right. दशरथ प्लस क्या बोले दशरथ? जैसे अण प्रत्यय. अन दक्ष जो ऑलरेडी प्लस एग्जिस्ट है वर्ड प्रत्यय. वही अंग प्रत्यय. दक्ष प्लस इया प्रत्यय becomes Dakshi. Okay, Dakshihi. There are many both. Garga plus Nyay is equal to Gargya. Vatsa plus Nyay, Vatsyaha. So Gargya means someone who is having the Gotra, Garga Gotra, will be called Gargya. Bharadwaj plus Nyay is equal to Bharadwaj Gotra. Okay. So these pratyas are added with the existing word. That existing word is called Anga Sanya. Clear? Yes. Clear. And that Anga Pratyangam, Pratyay ka Anga hai wo. यस्मात् प्रत्यय विधि, जिसके ऊपर प्रत्यय का विधान किया जाता है. तो प्रत्यय का विधान यानी क्या? कुछ तो है पहले तभी तो उसका विधान होगा ना. तो जिसके साथ ये प्रत्यय का विधान किया जाता है उसको, हाँ, स्तद आदि, उसके आदि में जो है. तो आदि में क्या है ना? रघु है, गर्ग है, वशिष्ठ है, दशरथ है, उसके साथ दाशरथी, जमदग्नि, जामदग्न्य, गर्ग ऋषि, गार्ग्य. So you add that pratyay and then it changes to a different form. So that existing word is called the anga, the limb of the pratyaya. Clear? हाँ, हिंदी में भी बोल दीजिए प्रभु. बोल दिया ना, पहले ही बोल दिया. ये आपने बताया इसके साथ क्या बताया? प्रत्यय का विधान, इसके बोलिए. ऊपर प्रत्यय का, क्योंकि आपने बताया यस्मात् प्रत्यय विधि, जिसके ऊपर प्रत्यय का विधान किया जाता है, उसके हाँ. साथ प्रत्यय का विधान किया जाता है. इसके आदि में ये प्रत्यय जोड़ा जाता है, जो आपने बताया अंग संज्ञा. यहाँ से समझ में नहीं आया तो. हाँ, वही तो मैंने उदाहरण के साथ बोल दिया ना. गर्ग प्लस न्याय प्रत्यय इज इक्वल टू गार्ग्य. तो गर्ग का अंग संज्ञा हो गई. यस्मात् का क्या अर्थ होता है? कौन सी विभक्ति है? विभक्ति धातु जब तक क्लियर नहीं होगा हमेशा समझ में नहीं आएगी बातें. यस्मात् कौन सी विभक्ति है? हाँ, पंचमी विभक्ति एक वचन अपादान. हाँ, तो पंचमी विभक्ति का क्या अर्थ होता है? अलग होना. अलग होना. हाँ? अलग होना. ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुव से अलग होना मतलब पंचमी. हाँ, तस्मिन् अपादाये अपादानम, जहां से विच्छिन्न होता है. तो यस्मात्, तो जो है उसी के साथ तो इसका प्रयोग किया जाता है ना प्रत्यय का. तो गर्ग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, गर्ग के साथ आपने यहां प्रत्यय लगाया तो गार्ग्य शब्द बना. तो गर्ग यस्मात् हो गया, यस्मात् संज्ञा उसकी हो गई गर्ग की. यस्मात् प्रत्यय विधीयते, तो प्रत्यय, न्याय प्रत्यय किसके साथ लगाया गया ना? गर्ग के साथ. तद आदि, तो आदि में क्या है? गर्ग है.
प्रत्ययंगम, वो प्रत्यय का अंग हो गया। तो प्रत्यय है यय, उसका अंग हो गया गर्ग। और क्या समझने में बाकी है? आगे हाँ वरिंदर जी। आगे आज आप कुछ ठंडे दिख रहे हैं। नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ, मेरे को आ गया इसलिए मैं चुप करके बैठ गया। अच्छा, मौनमेव सम्मति लक्षणम। अगर कोई कुछ नहीं बोलता है तो समझ लो वो समझ गया है। ठीक, चलिए अंग संज्ञा क्लियर हो गई। द्विवचन संज्ञा, एक वचन, बहुवचन, उपपद, सर्वनाम, लुक, गुरु संज्ञा हो गया। गुरु हाँ, अब उपसर्जन संज्ञा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। नहीं, तत्पुरुष का तत्पुरुष तत्पुरुष का ये नहीं हुआ ना। 76 तत्पुरुष, हाँ दिवस द्विगुष्ट। तत्पुरुष तो पहले ही मैंने एक दिन बता दिया था ना, याद है आपको कि भूल गए? कल भी तो मैंने चर्चा किया था ना। जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष कहते हैं। याद है आपको कल जो पढ़ाया था? प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। जी। ठीक है, तो उसमें नहीं, इसमें जो दिगुरपी तत्पुरुष संज्ञा का स्यात्। हाँ दिगुश्च माने दिगु इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ तत्पुरुष, दैट्स इट। And what is Digu? I explained Sankhya Purvo Digu. Digu is a kind of Tatpurush which has one number at the beginning. Trayanam Lokanam Samahara Triloki. This example I gave yesterday. जी प्रभु जी। So, like पंचानाम गवाम समाहारः, पंचगवम, 5 गायों का समाहार, समूह, झुंड इज पंचगवम। समाहारे दिगुर द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्। Whenever there will be samahar, listen carefully. Whenever there will be samahar, samahar can be in digu also, sometimes samahar can be in dvanda samas also. Okay, but that we will not explain now, otherwise we will get confused. But digu is definitely sankhya purva digu. Purva means before and uttar means after. So some samas which is carrying one number at the beginning, like trayanam lokanam samaharah triloki, panchanam gavam samaharah panchagavah, panchagavam. Right. So it says samahare dvigur dantascha napumsakam syat. Whenever there will be a collective samas, okay, which having the word samahar, so the outcome, the samastapad will be in napumshaklinga, neuter gender, like panchagavam, like phalam. So Tatpurush, you understood. Tatpurush Karmadhara is also a kind of Tatpurush Samanadhikaranah. Tatpurusha Samanadhikaranah Karmadharayah. It's also Karmadhara is also a kind of Tatpurush Samas, but it carries Visheshya Visheshan Sambandha. Okay. Adjective and noun combination is called Karmadharaya.
and some samas which is having one number like 3, pancha, these are numbers. So someone which has numbers, they are called Dvigu samas. Sankhya purvo dviguhu. Okay. So the topic is Tatpurush. Tatpurush, the Sanya, it says Adhikaroyam prag bahubrihehe. No, that is not the sutra. Dviguscha is the sutra. Cha means also. Digu is also a kind of Tatpurush. That is what it is saying. And what is Tatpurush? Na prayena uttara padartha pradhanaha. I explained it on that day very vividly that there are 2 padas. I said, like Krishnascha Ramascha is equal to Ramakrishna. Ramascha, Krishnascha, Ramakrishna. So Rama is Purvapada and Krishna is Uttarapada. This I said again today also. So in Samas, generally there are 2 padas except Dvanda Samas. Dvanda Samas can be Hari, Hara, Guravaha, more than 2. But mostly all the Samasas having 2 padas, they are being conjoined. So the first pada is called Uttarapada, Purvapada, and second is Uttarapada. Now, the samasas are being divided on which one is prominent. Okay? Abhyai bhav prayena uttara purvapada purvapadartha pradhana. Abhyai bhav, the Purvapada is more important. Like Krishnasya samipam upa Krishnam. So Upa is more important than Krishna. Okay? And Prayena Uttar Padartha Pradhanaha Tatpurusha. In Tatpurush, the Uttar Pada is more Pradhan. Gramam Gata, Grama Gata. So Gata is more important than Grama Shabda. This is Tatpurush. And there are 2 types of Tatpurush. Karmadharai and Dvigu. What is the indication of Karmadharai? Karmadharai, one will be adjective noun. Adjective one noun. will be noun. So like Neela Kamalam, Neela Utpalam is equal to Neelotpalam. Blue is an adjective. Utpala means lotus is the noun. Blue lotus. It's a Karmadharai where there is one is adjective, another is noun. No. And Dvigu, where there will be Sankhya Purva Digu. It will start with a number. Trayanam Lokanam Samahara Triloki. Then Panchanam Gavam Samahara Panchagavam. So Pancha, Tri, Chatur, Panch, Sapta, Nava, these words are there. Chaturvedi. Chaturvedi also. Yes. Chaturnam Vedanam Adhitara, who has studied 4 Vedas. Studied or who knows 4 Vedas? Yeah, who knows? Okay. Okay. Anything else? That's it. बहुवचन संज्ञा, एक वचन, अंग संज्ञा, तत्पुरुष संज्ञा. उपसर्जन प्रभु जी, बाकी 4-5 उपसर्जन कल करते हैं ना. That will be उपसर्जन कल करेंगे. नहीं, it's okay. We can continue. No problem. No, it will take some. हाँ बोलिए. Today we have done up to means 1, 2, 3, 4, 5. Means I was thinking like we have yesterday we have done 9, or today we done 9 and 9 we will left for tomorrow. That's my logic. Yeah, so leave it because Upasarjan is a different topic which will take some absorption. So any question related to those what I yes Pankaj जी बोलिए, आपका स्वागत है. प्रभु जी, मेरा सवाल मतलब
आज के सेशन में नहीं था, वो अच्छा। हमने दूसरा सेशन लिया, उसमें हमने तद्राज संज्ञा, अच्छा, मैंने तद्राजा। तद्राज, हाँ वो ते मैंने तद्राज। मतलब वो नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको नंबर हम समझा देंगे, सुनिए, इसको हम कल अच्छी तरह से समझा देंगे, कुछ उदाहरण दे के समझा देंगे, ठीक है। इट्स ऑल्सो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स थिंग। आज के कॉन्टेक्स्ट में कोई प्रश्न है तो बताइए, और पूर्व का भी कुछ भी हो तो हम उसको कल रिफ्लेक्ट करेंगे। एनीबॉडी एल्स? प्रभु जी एक जी बार बोलिए। थोड़ा लुक संज्ञा का थोड़ा सा एक बार बताइए, क्योंकि मैं जब ऑन किया ना तो आप एंड कर रहे थे उसको। लुक संज्ञा क्या है? प्रत्ययश्च लुक श्लुलुपः। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे प्रत्यय का विधान तो होगा, लेकिन दूसरा सूत्र आ जाएगा, कहेगा इस प्रत्यय का लोप कर दो, ठीक है, इस प्रत्यय को हटा दो। तो वो जो सूत्र होगा उसमें चाहे लुक लिखा हो, लुप लिखा हो या श्लू लिखा हो, ऐसे सूत्र हैं। जैसे हाँ, तो ये सभी सिनोनिमस है, पर्यायवाची शब्द है। लुक हो, लुप हो या श्लू हो, इन तीनों को चाहे आप विष्णु कहो, आप कृष्ण कहो या नारायण कहो, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, लुक, लुप और श्लू पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिमस है। तो इनमें से कोई एक शब्द आपको मिलेगा। ऐसे और भी पर्यायवाची शब्द आपको मिलेंगे, जैसे विभाषा, वा, अन्यतर, ये सब आपको मिलेगा। अन्यतर इज इक्वल टू विभाषा इज इक्वल टू वा। वा मीन्स इधर दिस और दैट, ठीक है। तो सूत्र में कहीं पे आपको वा मिलेगा, कहीं पे अन्यतर, जैसे एक सूत्र आता है, देयर इज अ सूत्र शिष्यान्यतरस्याम। तो अन्यतरस्याम, like you see yesterday someone saying that in this dhatu there are two forms, this athava that, this or that. So how this is being created? There is 9 form in lit lakar, another 9 form in lit lakar, same lakar. So that means there are certain sutras which are creating this sutra at this form, and there are some other sutras which is saying that no, use this sutra, and then you are getting other forms. In vibhakti also you will see, like ma no naha, asmad shabda, me no naha, षष्ठी vibhakti. Also in bhu dhatu, if you see in lot lakar, bhavatu, bhavatam, bhavantu, but bhavatu, bhavatam, bhavantu, bhavatu / bhavatat. So there are 2 forms in lot lakar, pratham purush ekvachan. So there are 2 sutras. First you use one sutra, then other sutra says don't use this sutra, use this sutra. And then you create another form. So this is called anyatarasyam, or va, or vibhasha. So ये विभाषा शब्द, वा शब्द और अन्यतरश्याम are all synonymous. ये एक ही चीज को बता रहे हैं। उसी प्रकार प्रत्यक्ष लुक श्लू लुपः, लुक, श्लू और लुप, ये तीनों में से कोई भी शब्द आए, ये पर्यायवाची शब्द है। किसी में पाणिनि जी ने लुक लगाया, कहीं पे लुप तो कहीं पे श्लू लगाया। दैट्स इट। ओके, तो यही लुक संज्ञा है, दैट्स इट। हाँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब आप लघु सिद्धांत कौमुदी में अगर इस सूत्र को ढूंढ के पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यस, आई विल ट्राई। कुछ सूत्र है, यूस्त्राख्यो नदी, और अभी जो गया, अभी क्या आ रहा था, कल हम पढ़ाएंगे जिसको बोला उपसर्जन। हाँ, उपसर्जन। ये सारी चीजें थोड़ा समझना होता है। तो बिना सिद्धि किए, विदाउट डूइंग दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। तो दिस काइंड ऑफ सूत्रस वी विल टेक मोर टाइम,
we will repeat them again. But pratyasya, luk, slu, lupaha, guru sanya, laghu sanya, these are very simple. This is just naming them. Bha sanya, sarvanam, sthan sanya, there is nothing inside, just a name. But there are certain places where it is a bit complex. So those sutras we will highlight and we will discuss at the end again. Okay, no problem. Anybody else? Siddhartha Das. Yes, Yes. Prabhu. Yes, you did not show up today. Yes. I was expecting your questions. Siddhartha Das. My question, you are ready for them? Why Okay. this Nya Sutra is your favorite? Which sutra? Repeat it. Your voice is breaking. Sutra is favorite. Sutra number? I don't hear you. I think there is. Nasanya. What is? Naisanya. क्या बोल रहे हैं? Repeat it. Angasanya. 74th. Okay, Angasanya, I think you are saying. Yeah, you said that it's your favorite. No, What? Which is your favorite? 74 is Divachan, he is telling. No, your Oh, favorite Divachan. Sangya. Prabhuji, he's asking about your favorite Sangya. Oh, favorite Sanya. Yeah, you name it Nasanya, yeah? Anudit Savarnasya Cha Pratyaya. This is one of the most complex Sanya. Anudit Savarnasya Cha Pratyaya. That we have crossed already. So these things I will repeat again following the Mahabhashya. We will decode the things more vividly. Now I am giving one layer. You know, like when you paint, you give one coating, then you put another coating. So I just gave one coating. समझ में आया वरिंदर जी? जी प्रभु जी समझ रहा हूँ अभी कुछ चीजें भी क्लियर हो और यश समझ में आ रहा है यश? अभी प्रभु हाँ, जी ऐसा प्रभु लग जी। रहा है कि जैसे ना इंटरेस्ट बन रहा है अभी मजा आ रहा है हाँ, सब्जेक्ट जितना कॉम्प्लेक्स होता है उतना ही आनंद आता है. मुझे तो ऐसे ही आनंद आता है. As अभी much मुझे भी ये लग रहा है complex. कि अभी बहुत हो गया अभी सीखनी है चाहे जो मर्जी है जल्दी सीखनी कब हो हाँ. जाए पहले सीखो अगर आपको सूत्र समझना आ जाए, if someone can understand the sutras, almost 60% job is done. You understand? Not 60, even more, 75% job is done. So that is what I'm doing. Generally, students, they just take and they start doing the siddhi. They start making the forms, but they don't know a little bit of the sutras. And that's how they get the certificate also. They finish their education, but if you ask any sutra, they won't be able to decode it. You know, that is what makes it. So I'm having a different approach of teaching. I'm just decoding the things first. So when you will apply, it will be much easier. Okay, Prahlad ji. Hare Krishna Prabhu, can you re-emphasize, as you mentioned this point quite interestingly, the importance of these sutras? In your view as a teacher to us, why these sutras? Once more, could you recap or summarize why introducing us as to sutras is of utter importance in regard to learning grammar, Sanskrit grammar? Yes, so grammar is very much similar to mathematics. Now all of you have done algebra, right? Yash? Algebra किया है? Yes. हाँ प्रभु जी। किया है. तो algebra, you will see the main thing, a cube plus b cube is equal to a plus b whole cube plus 2ab, like that. A square plus b square is equal to a square plus 2ab plus b square. So the formula is very important. You understand? All the ingredients are there, but if you forget the formula, then you won't be able to do anything. So the formula, the grammar lies in the formula.
why the grammarians took so long to create one formula. Sometimes they took 1 month, 2 months, 3 months, 6 months. Because the seed is there. If you are able to decode it, then you will understand what is its utility. You understand? I gave you a gemstone, but you have no idea of gemstone. So then it's like a green stone for you. But someone who knows, oh, this is emerald, I have to cut it, then I have to polish it, and then I have to make it into 6 carat and 5 carat and divide, and then I can sell it. So this idea comes, one who knows it. But if you are blind with the sutras, then you cannot function in the grammar, because the grammar is based on sutra, like algebra is based on its formulae. So that's why in right place, when you see, like today I taught you Gargya. Someone says, oh, I am Gargya Gotra. What is your Gotra? Na Gargya Gotra. So you will immediately understand, oh, Yai Pratyay from Tadhit chapter. Garga is the word and Yai is the Pratyay. And you remember immediately which sutra has administered this Yai Pratyay. That is important. So that is the yardstick. That is the rule of the constitution. You know, if you know the constitution very well, you know what type of democracy, what are the rules of that country. So when you mention, even if you go to a court and fight a case, Rakhi Bhattacharya is a lawyer, she will know. So you have to mention the law, rule number 19, what? Rule number 2BB under section 45. ऐसे ही बोलते हैं ना राखी? Yes, So, Prabhu. तो under section 29, rule 2BB, this is a criminal case. So you have to give the reference of the rule. Similarly, here, whenever you are proving a word, you need to prove it through the sutras. When you give Harikatha, we need to mention, we need to mention the Bhagavad Gita slok. Same thing here. You understood? Yes. But nice question. Yeah. So, okay, I will take permission of all of you. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Vancha Thank kalpadru you. Thank you, Prabhu. Krishna Vibhu. Namo Namaha. Sarvebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna.